biggest that I've seen is probably 8 crore per annum. And it's a domestic package. It's a domestic package in India, based out of Bangalore. वहाँ मेरी starting salary 2.5 लाख रुपए थी करीब. 2.5 lakhs per annum. This I'm talking about 2003. Okay. Switch is not always the right answer, right? Got it. But it depends where you are. Alright. So maximum what have you seen? Like कितना percentage hike तक मिल सकता है? कितना expect कितना करना चाहिए? मैंने 400+ % तक भी ऑफर होते हुए देखा है. एक गुड डिसेंट अच्छी स्टार्टअप आपको कॉलेज के बाद $100,000 देती है, Which is 80 lakhs. which is 80-85 lakhs rupees, right? So that's what you get. मैंने बहुत तरीके से और साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं किया, अगर बट एक बॉल पार्क दूँ मैं अपने लिए तो शायद वो एनीवेयर बिटवीन 25 से 50 करोड़ रुपए होगी. Hi everyone. So in this episode we'll talk about how much can software engineers make. So Yasir, I have been getting a lot of questions around salaries that software engineers get and financial freedom, retirement and a lot of other stuff. So let's have a candid discussion on it. Absolutely. Thank you, Fraz, for having me once again here on your channel. Would love to discuss this. Before we start, a little introduction about Yasir. So Yasir is the co-founder of NextLeap. Before this, he was at Myntra as a VP, and before that, he was at Flipkart as a senior director of engineering. So काफी अच्छा experience, and I think he can answer all the questions that we have. So आपके लिए सबसे पहला question Yasir, what is the maximum salary that you have seen? Okay, I'll not take any names, right? Not the company, but it's in software engineering domain, and the biggest that I've seen is probably 8 crore per annum. And it's a domestic package. It's a domestic package in India, based out of Bangalore. Awesome. What are the components of a salary? Basically, there are 3 big components of a salary. The first part of it is the cash that you get in hand. Then there are the benefits, and then the third part of it is the equity. Right, so the cash will be what you will actually get in hand. Benefits can range anything from health insurance to gym memberships to anything else, and the equity, of course, is equity which is in the company. Great. So you being a manager, you also recruited a lot of people. What is the maximum salary that you have given to an employee? I'll be talking about the cash plus benefit part of it, not the equity. That would be somewhere around, I've hired several people at very senior roles, so that would be somewhere around 1 crore per annum is what I've offered. Okay, 1 CR cash. Yes. So Yasir, we have seen a wide range of salaries with which people start. So let's say TCS, Accenture, starting from 3.5 LPA. Then there are FAANG companies offering 40 LPA. Absolutely. CTC. So what do you think? The trajectories are going to be different for these people? क्या एक 3.5 LP से जो start कर रहा है, will he be left behind? नहीं, it depends on everything, depends on the individual. मैं जब ग्रेजुएट किया था, मेरी पहली नौकरी लगी थी अदिति टेक्नोलॉजीज में. वो एक सर्विसेज कंपनी थी. इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी. लॉट ऑफ गुड पीपल दैट आई हैड लर्न फ्रॉम देम. वहाँ मेरी स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख रुपए थी करीब. 2.5 lakhs per annum. This I'm talking about 2003. Okay. At that time, in campuses, there was Trilogy which used to come, and it used to offer 7 lakhs at that time. Right? A lot of people, batchmates and others, had gotten that. Right? Again, a huge difference. A huge difference, right? Huge difference. And in those times, it was like 7 lakhs was awesome. Yeah. What I did within a year, or managed to do within a year, was cover that gap. Right? Within a year and a half, I got an offer of close to 6.5 lakh rupees. Right? Awesome. And to do that, I came from a mechanical engineering background. I had to catch up on computer science, a bunch of things, right, like DSA, like operating systems and everything else, which I did, studied a lot of books, but ended up in kind of acquiring that knowledge and cracking that. And after that, there's been no looking back. All right. So being from a mechanical background, you had to cover everything by yourself. Yes, right? Absolutely by myself. Awesome. So as you said that you switched from one company to other company and you were able to fill that gap, right? 2.5 to 6 LPA is a good jump. Now the question is, ki being in a same company, let's say if a person is staying in the same company for 5 or 10 years, what is the percentage hike that he can expect? So if you stay, see, there are good hikes that companies do as well, right? I mean, there are periods where you could probably see a 25% hike or something like that, right? Per annum. Even per annum in good years, if you've really done well, and the company is also doing well, right? The companies can give you 25% hike. But it depends, right? What is important is you set the benchmark. What is the kind of company that you'd want to be in? So let's say if I am in a company which is not a good paymaster, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट में अगर मैं गूगल में हूँ,
तो मैं वो 25% हर साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेस काफ़ी है, करेक्ट। राइट. बट हाँ, मतलब 10% टिपिकल होता है, 8 से 10% इज व्हाट टिपिकली हैपेंस. स्विच इज द राइट वे फॉर सैलरी हाइक्स? नॉट नेसेसरली. माइंडलेस स्विचिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर. अगर आपने रियली अपने आप को अपस्किल किया है और अब आपका लेवल यहाँ है और आप इस तरीके की जॉब ले रहे हो, तो बिल्कुल, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपकी उस कंपनी में नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हो. बट अदरवाइज स्विच इज नॉट ऑलवेज द राइट आंसर, राइट. Got it. बट इट डिपेंड्स वेयर यू आर. All right. I think in your case it was a 300% hike, right? Around. Yes. But look at it. When I moved from a services company to a product company at that time. Okay. Right. I hope आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा. आगे बढ़ने से पहले there is a quick announcement regarding my DSA batch. So my new DSA batch is going to start very soon, जहाँ पर हम लोग complete DSA cover करेंगे, starting from very basic topics till very advanced topics. We will solve a lot of problems in every topic so that हमें पैटर्न समझ में आ जाए, because पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होगा कि you will be able to classify any new problem in one of the patterns that we have learned. उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लगाना है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न. सो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी सिंपल हो जाती है. सारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं. इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप लोग को लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल लर्न अ कॉन्सेप्ट, विल ट्राई टू रिलेट इट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ड्यूरिंग द क्लास. आफ्टर दैट आई विल गिव यू असाइनमेंट, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमने क्लास में करे हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. You will have a dedicated doubt support जहाँ पर आपको instantly आपके doubts का solution मिल जाएगा. You will have a very good community. Along with that, you will also get a certificate of completion. अब उन लोगों का क्या है जिन लोगों को कोई programming language नहीं आती है. So for them, there are two options. I will provide these module for free, C++ and Java. These two modules will be provided to you for free and you can learn either C++ or Java if you don't know any other programming language. बाकी आपको JavaScript, Java, Python कुछ भी आता है, you can start directly with DSA. ठीक है. सो बहुत मजा आने वाला है कोर्स में. अलॉन्ग विद दैट विल गेट अ प्लेसमेंट सपोर्ट. सो देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर दिस. जो लोग उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे वो लोग 1 ईयर प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जहाँ पर एक कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोसेस होगा. कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फोनपे, बहुत सारी कंपनीज हैं. यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपनी. एंड बाकी देयर इज अ डेडलाइन फॉर डिस्काउंट, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है. अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. Alright, so maximum what have you seen, like कितना परसेंटेज हाइक तक मिल सकता है, कितना एक्सपेक्ट कितना करना चाहिए हमें? मैंने 400+ % तक भी ऑफर होते हुए देखा है while I was working as a company, right? So the sky is not the limit. होता क्या है कि हर एक लेवल पे उस कंपनी का एक सैलरी रेंज डिफाइंड होगा, एक मिनिमा और मैक्सिमा. आप उसके बीच में ही आओगे. अगर वो कंपनी ढंग की है, अच्छी कंपनी है, तो जब आप ऑफर, अगर आपने उनका इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अगर उनका बार क्लियर कर लिया, तो आपको इस रेंज में सैलरी ऑफर करेंगे, विच कुड बी द मिनिमम. बट दैट मिनिमम कुड बी 400% और 4x ऑफ योर करंट सैलरी. एग्जैक्टली. सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट. राइट. ही वाज स्विचिंग फ्रॉम TCS. राइट. So his expectation was to get a certain, I think 15 or 16 LPA. Right. Whereas Microsoft, they have a range for SD1 profile. They have a minimum limit and the maximum limit. Right. उनको उसी के बीच में देना है. हाँ. So his expectation was 16 LPA and he got 20 LPA. बिल्कुल. Right. Because तो सामने से कंपनी ने वो कंपनी देती है, राइट. तो उसकी फिक्र आपको करनी ही नहीं है. आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किन कंपनियों में काम करना है, किन कंपनियों में अच्छा काम हो रहा है और मुझे उन जगहों पे जाना है. उन जगहों पे जाने के लिए एक सर्टेन स्किल सेट लगता है. आप उस पे फोकस करो, उस तैयारी पे फोकस करो. ऑलराइट. पर मैंने कई बार देखा है, अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स व्हाट दे डू इज दे आस्क कि लास्ट कंपनी में कितनी सैलरी थी, एंड बेस्ड अपॉन दैट दे ट्राई टू डिसाइड कि इसको यार इतनी देनी चाहिए, इसको मिनिमम बैंड पे रखना चाहिए, मैक्सिमम पे रखना चाहिए. सो हाउ टू नेगोशिएट? मैं पर्सनली नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करता हूँ. हाँ, मैं ये ज़रूर करता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर लेता हूँ कि अच्छा, अगर इस कंपनी में जाना है या इस लेवल की कंपनी में जाना है मुझे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, राइट. और मान लिया कि वो 24 लाख है, वो 25 लाख है, वो 50 लाख है, वॉट एवर दैट नंबर इज, राइट. एंड आई जस्ट स्टिक टू दैट, राइट. आपसे रिक्रूटर भी पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. करेक्ट. राइट. मेक श्योर कि वो एक लॉजिकल नंबर हो, इलॉजिकल ना हो, एंड जो वो आपकी एक्सपेक्टेशन है आप बता दो. उसके बाद मैं टिपिकली नेगोशिएट नहीं करता हूँ. मुझे अच्छा लगा, हाँ मुझे लगा कि वहाँ काम बहुत अच्छा है, तो कि 1-2 बार मैंने थोड़ा सा कट जरूर ले लिया है. बट अदरवाइज आई डोंट टिपिकली नेगोशिएट सैलरीज. इवन व्हेन आई एम ऑफरिंग दिस एज ए सैलरी, व्हाट आई ट्राई टू डू एज ए मैनेजर इज कि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी सोचूंगा कि भाई इट शुड बी ए गुड ऑफर फॉर Fraz, let's say Fraz, and Fraz should join. So I'll make an just an honest offer,
right? Got it. And if that person doesn't agree, then typically I don't end up in revising the offer as well. All right. We should be careful about the figures that we are putting in. Yes. So, being a manager, you have reportees and you know salaries of all your reportees. Yes, you do. तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपके रिपोर्टीज की सैलरी आपसे ज़्यादा है? हाँ, मेरे साथ हुआ है, 2-3 मरतबे हुआ है, 2-3 टाइम्स इन माई करियर. देयर वाज वंस आई वाज लकी इनफ कि 5 साढ़े 5-6 साल में कंपनी ने फेथ दिखाया मुझ में और मुझे मैनेजर बना दिया था. और देयर वर टाइम्स व्हेन देयर पीपल हु हैड क्लोज टू at that time 18-90 years 19 years of experience who were reporting into me, right? उनकी सैलरी मुझसे ज़्यादा थी, बेशक ज़्यादा थी. ऐसा मैंने अपने रिपोर्ट्स में भी देखा है. कुछ मैनेजर्स जो मुझे रिपोर्ट करते थे उनके रिपोर्ट्स की सैलरी उनसे ज़्यादा हो गई है. एंड दैट्स फाइन, राइट? मैनेजर्स को मालूम होता है एंड दे नो हाउ टू डील विद दैट, राइट? यू जस्ट नीड टू, दैट्स फाइन. Great. Now let's come to an interesting point. Let's talk about financial freedom and retirement. First of all, how do you define financial freedom? Financial freedom for me, Fraz, is you reach a point where you're able to pursue your passions, Okay. right? Without having to worry about the cash inflow of a salary or whatever it is, right? So if I'm able to do, let's say, I love seeing how people can grow, right? I love teaching people, let's say, right? Okay. And if that is what I love doing, then can I do that as a full-time thing on a daily basis? Got it. Without bothering about the money that's coming in through. Absolutely, absolutely. I mean, the money could be there, it always helps, but even if it's not coming, will I be able to pursue that? All right. Is there a certain amount which we need to have to say that we are now financially free? It depends, right? I mean, specifically when talking about following your passion, it's a very subjective thing, right? Whenever you realize you're ready, you can go ahead and do that, right? I mean, look at, for example, Sachin and Binny when they started Flipkart. They started it fairly early on in their career, Correct. right? And they built such a massive company, right? Yeah. So I don't think there is a right age or there is a place where you do that. It's a feeling, it's a conviction that you have. When you'll have it, you'll know it, and you'll do it. Definitely. So it depends. Like it's the mindset that we have. Yes, absolutely. All right. Now let's talk about retirement. What is retirement? How do you define it? Retirement, very honestly, with the way that we are working, right, with the pace at which we are working, I don't know how long anybody can sustain it, right? And maybe I can do it for 60 years. I would like to continue to work as long as I can, right? But retirement, I think at some point in time, you'd want to kind of just do something else. Maybe do philanthropy, maybe just do things for social causes, right? Let's say if that's what, even if I call as a retirement, it's a point in time where you stop having a primary source of income, right? Got it. And you start relying on the corpus that you've built. Okay. राइट, या आपने जो सेविंग्स बनाई है उसके ऊपर अब बाकी जिंदगी जो जी पाएंगे. हाँ, एंड यू नेवर नो, हो सकता है हम लोग के टाइम आते आते हम लोग 55 पे ही रिटायर करें, राइट? इतना प्रेशर है, हो सकता है 60 तक सस्टेन ना हो. Got it. And what is that corpus? Do you have any idea about it कि कितना corpus होना चाहिए? आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे, अगर आप एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हो तो आप चाहोगे आप वही लाइफस्टाइल मेंटेन करो. तो अलग अलग लोगों के लिए जिस स्टेज पे हो आप लाइफ पे वो अलग होगी. मतलब मैंने बहुत तरीके से और साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं किया, अगर बट एक बॉल पार्क दूँ मैं अपने लिए तो शायद वो एनीवेयर बिटवीन 25 से 50 करोड़ पे होगी. Alright, so if you have 50 CR then you can say कि Yes. I don't know whether I'll be content, but I think that should be good enough to lead a good life. Alright, great. Now, being a software engineer, can we achieve financial freedom or retirement? Financial freedom, as you said, it's about the mindset that we have, right? So if I want to take a risk, I have spent 2 years working, so I don't have enough corpus with me. Right. But if I want to take that risk and go ahead, do something, I can say I'm financially free, I'm pursuing my passion. Right. But how long would it take to get retired? See, once you build the corpus, right? And so how do you build that corpus quickly? सैलरी से, आपकी सैलरी से आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं होना है. अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो या तो आप एक अच्छी कंपनी को पहले पहचानो. बहुत सारे लोगों ने फ्लिपकार्ट ज्वाइन की 2007, 8, 9, 10 में, राइट? एंड द मल्टीपल्स दैट दे वुड हैव मेड in terms of equity, it would have been huge. A lot of people made a lot of money, and Flipkart was a great company to have kind of
did that. It was in the news Yes, recently, and right? it has actually generated a lot of millions Wealth of for everyone, yes, absolutely. The point is you spot the right companies and kind of go believe in them, right? And work for them, right? Or you start something of your own, right? All right. And when you say ki identify the right company, that means join the company and be a part of it in terms of Yes. equity, right? Yes. So all good companies nowadays will give you ESOPs or equities or employee linked stocks that are there, which you'll get, which you'll vest, right? Of course, they have a vesting period. 4 साल लगता है आपको उसको पूरा वेस्ट करने में, टिपिकल. तो आपको वहाँ पे अर्ली जाना है, उसको उस कंपनी को हेल्प करना है ग्रो करने में. अगर कंपनी बड़ी हुई तो आप भी बड़े होगे. So this can happen only in startups, right? But startups are risky, जितना मैंने देखा है. और जब से actually मैंने graduation करी है, I have seen this phase of COVID and after that recession, layoffs. Right. The startups are very risky. Whereas FAANG companies, where you get the stocks, right? Those are less riskier in these kind of scenarios. So what do you say कि किसी बंदे को startup join करना चाहिए या फिर we should? अगर इक्विटी की बात करें तो जो मल्टीपल्स आपको एक स्टार्टअप में मिलेगा वो आपको फैंग में उतना नहीं मिलेगा, राइट? फैंग गूगल का शेयर 100x शायद अगले 5 साल में शायद नहीं होगा, या 20x नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, राइट? तो हायर रिस्क टू हायर रिवॉर्ड वाला सिनेरियो है, राइट? आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी अगर आप रिवॉर्ड हायर चाहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर चाहते हो. So we have talked about salaries, right? Right. Now let's also talk about the expenses. Absolutely. So let's start कि कहाँ expenses होते हैं. Why don't you start? You tell me. आप as a bachelor, right? I think stages of life के हिसाब से depend करता है. आप early stage में हो, bachelor हो, आप बताइए आपके expenses का. Correct. So actually I have made a full video on this. So as a bachelor we don't have a lot of dependents. So my salary goes in paying my rents and other expenses which I do to live and sustain in Bangalore. For me it's about 60,000 per month. And for others, for a few of my friends, it's 12 to 15,000 as well. Depends upon how you would like to live. Other than this, I had done a big expense getting a house. I was lucky enough that I got a house. And one more expense yet to come till the time I'm a bachelor is शादी वाला expense. बिल्कुल, वो आपके नेक्स्ट लाइफ स्टेज है फराज. आप उस लाइफ स्टेज में जाएंगे तो आपके खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे. आपको आप शेयर्ड अकोमोडेशन में नहीं रहोगे. मान लिया अगर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे थे, आपको उसके बाद आपका स्टेज आएगा. इफ़ यू हैव ए फैमिली, इफ़ यू डिसाइड टू हैव ए फैमिली, बच्चे होंगे, उनकी नीड्स आएंगी, उनके एजुकेशन बढ़ेंगे. दे विल गो थ्रू प्राइमरी एजुकेशन विच इज़ कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव दैन लेट्स से व्हेन दे गो फॉर their graduation, right? And in India, parents still sponsor that, right? So, depending on different stages of life, आपके expenses बढ़ते जाते हैं, है ना? आपके अगेन गिवन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, बाय द टाइम यू आर 20 years into your job, वो लोग रिटायर्ड हो चुके होंगे. हालांकि उनकी पेंशन हो सकता है खुद की आ रही होगी, बट उनके हेल्थ केयर नीड्स और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, विच यू वुड ऑल्सो वांट टू प्रॉब्ली शेयर. Okay, nice. Yasir, I'm also bad at investing. So I don't invest a lot. I've got a house which is it's a liability. People say it's not an asset. What are your thoughts upon it? How should we invest? See, by the way, I'm not very good at investing myself. But I think the base principle always remains the same. Make sure that you have diversified your investment. Some part of it goes to your real estate. Let's say some part of it goes into gold or bonds, some parts of it goes into mutual funds, and if you have the time, effort and energy, maybe you can deal directly with stocks, right? That's what I do, but primarily I think a large part of it, according to what I believe in, is I try to do things where I have more control, right? So if I can try to build a company which is where my largest equity lies, right, then I'll try to do that. Great. Right? So see if you can build something for your own Atmanirbhar Bharat. Yes, absolutely. Okay, let's also talk about the job scenario in the US, because most of my friends after graduation they went to the US, and now also a lot of people working in TCS, Infosys, they do prepare to get a job abroad, right? Canada or US. So what is the job scenario there right now? And for the same role, same profile, same experience, what is the increase in the salary that I can get, India versus US man, and expenses of course? Got it.
सी अगेन जिस तरीके से सैलरीज में डिस्पैरिटी इंडिया में है उसी तरीके से यूएस में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में डिस्पैरिटी है. लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट कंपनीज वहाँ पे, बिकॉज ए लॉट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे हैज बीन अराउंड प्रोडक्ट कंपनीज. वहाँ पे क्या सैलरीज होती हैं. तो यूएस में क्या होता है कि टैक्सेस डिफर करते हैं. अनलाइक इंडिया जहां इनकम टैक्स, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं या कर्नाटक में, इट्स द सेम, राइट. वी पे द सेम टैक्सेस, द टैक्स रूल्स आर सेम. यूएस में दो कंपोनेंट होते हैं, फेडरल और स्टेट टैक्सेस, जो आपके इनकम से होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपका टैक्स डिफरेंट होगा. आपकी कैलिफोर्निया में जो टैक्स लगेगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू टेक्सास या फ्लोरिडा में जहाँ पे कम है. तो लेट्स टॉक अबाउट California, which is like the Bay Area, which is like the Bangalore equivalent for the US. वहाँ पे एक good decent अच्छी startup आपको कॉलेज के बाद $100,000 देती है, which is 80 lakhs, which is 80-85 lakhs rupees, right? So that's what you get. Okay. And like what are the taxes and what are the expenses especially? Right. So tax पकड़ लीजिए आप 30% उसमें, तो बचा आपका 70 के US डॉलर बचा. महीने का अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन ले रहे हो 2 लोग, तो $2,000 का शेयर्ड एकोमोडेशन आएगा. उसमें हजार आप लोगों ने दिए. अगर आप अर्ली स्टेज में हो, आपने गाड़ी ली होगी, इसका करीब $500 EMI प्लस अदर एक्सपेंसेस आएगा. खाने पे आप $1,000 पकड़ लो और मिसलेनियस आप 500 पकड़ लो, राइट. बट सब कुछ मिला के मोटा मोटी इन ए ईयर यू विल एंड अप इन सेविंग समवेयर अराउंड $20,000. Okay, around 16 to 17 lakhs. Right. Okay. All right, Yasir. So before we end this, there are a few questions which I want to ask, and ये rapid fire है, तो इसमें जल्दी आपको आंसर्स बताने हैं. ठीक है, bring it on. Yeah. Let's see. The first question is ESOPs or cash? ESOP always. Okay. Savings or investments? Investments, I think for the longer run, always. Okay. Hard work or smart work? Always work smartly, right? Because hard work doesn't count. It always matters. Smart work for sure. Okay. Financial freedom or retirement? Financial freedom. I don't know what retirement really means at this stage. All right. And the last question. Managing people or coding? I love managing people while I still code. So I think both in this case. I can't pick one. So thanks a lot, Yasir, for this awesome session. And I hope आप लोग को आपके answers मिल गए होंगे. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel if you want more such videos. So thank you, Yasir, for being here and sharing this with us.